मेरा फोन नहीं लगा भाई, मेरे उसमें भी लगा दो। Hello, good evening, students. Yeah, good evening, Pawan. Very good evening. Give me the clearance, audibility and visibility clearance, please. Is everything clear? Audibility and visibility, Pawan Kumar. All clear, okay. So very good evening to all of you. Welcome to Unacademy platform. Dr. Khalil here, welcoming you to the operating system course. And आज का हमारा जो डिस्कशन होगा प्रोसेस कॉन्सेप्ट चैप्टर के लेटर टॉपिक्स या रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल ट्राई टू फिनिश. फिर और टाइम अगर मिलेगा तो हम वी विल डिस्कस अबाउट द थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग. Okay, Harshit Jagal, very good, no problem. You can continue. देखिएगा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. वी हैव सीन व्हाट इज प्रोग्राम एंड व्हाट इज प्रोसेस. प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, and process is an instance of a program. Process is a program under execution. Process is said to be the locus of control of operating system. Process is an active entity. Process is a schedulable unit onto CPU. So very good evening, Aditya Patel and other people. Walaikum salam, Ashfaq. So welcome again. So these are the essential semantics with regard to process. Process as an abstract data type, हमने देखा कि उसके structure के components क्या है. It has code or text section, data sections, and then heap section, and then finally the runtime stack. Code or text section contain the instructions of the process. The static data contains basically like global variables and variables that are allocated memory using storage class, which is called static. फिर उसके बाद हमने देखा heap section is that area of memory from where we allocate space based on dynamic memory allocation. और जो stack है process की, that is meant for storing the activation records of the function call. Then we said process as an ADT will also have operations like scheduling the process, creating the process, dispatching the process, blocking the process, suspending, resuming, termination, all these are operations. Finally, जो last topic हमने पिछले क्लास में देखा वो था process attributes. Process as a real life entity will be always associated with set of attributes. Attributes का मतलब है properties, characteristics. जैसे कि process ID, program counter, process state, type of process, size of process, and then owner of the process. And then you have attributes like list of open files, list of open devices, and so on. Those are called attributes. और हमने ये भी देखा, the attributes of the process are stored in a table or data structure which is called PCB, process control block. Or some people even call it as task control block, process control block or task control block.
तो बच्चों ये था डिस्कशन पिछली क्लास का, और हमने लास्ट पॉइंट ये भी कहा था कि द टोटल कंटेंट ऑफ पीसीबी, जो इंफॉर्मेशन पीसीबी में होगा, द टोटल कंटेंट ऑफ पीसीबी इज नोन एज प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट और ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेस एनवायरनमेंट. Anupam Datta is asking a question, can I clear GATE with 6 months of preparation? Obviously you can clear. 100% you can clear. You can crack GATE by 6 months of preparation, 100% correct. Okay, you can do it. Provided आपने अपना basically एक अच्छा conviction हो, dedication हो, enthusiasm हो and consistency हो preparation में, आप ज़रूर कर सकते हो. तो चलिए बच्चों आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. आज के टॉपिक का वो है प्रोसेस स्टेट्स एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज गेट PYQs आर कंसर्न. तो ये टॉपिक के ऊपर गेट में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में. तो आज हम स्टडी करेंगे डिटेल में ऑन प्रोसेस स्टेट्स एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. देखिए, as the process goes from its moves in its life cycle, it is associated with several states. What are the different states? Like here I have listed on board. The different states of the process, one by one we'll try to highlight. Look at this. The first state is called new. The process is being created. मतलब the act of creating the process from program, that is called new state of the process. और essentially क्या होगा new state में? New state में जो होगा resource allocation, यहाँ पे लिखेंगे. Resources get allocated, resource allocation. Resource allocation. Whatever are the essential resources needed for the process, those are getting allocated, that get allocated. Resource allocation takes place. जैसा कि process control block create होगा, memory allocate होगी, registers allocate होंगे, right? All other files allocate होंगे, that is resource allocation. So all the resources which are essential for the process to get created, those are allocated during new state. Next, running. Running implies it is executing on CPU, it is running on CPU. Instructions are being executed on CPU. तो वो state हम बोलेंगे running. उसी तरह waiting. The process is waiting for some event to occur. ये event हो सकता है like IO or like system call execution या any resource requirement, resource request. The event could be like this. So process may be waiting for some event to happen, input output या फिर system call का completion हो या फिर any resource request which is not available, waiting state. Boys and girls, I would like to, so this is one state, running state, and this is waiting state. Boys and girls, I would like to tell you that waiting state is also called block state. Waiting state is also called block state. फिर उसके बाद रेडी है. रेडी का मतलब यहां देखिएगा, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर. प्रोसेस इज वेटिंग टू गेट असाइनमेंट टू CPU. So waiting where? Waiting in memory itself. So kindly remember, waiting in memory itself. Waiting in memory itself. So it is waiting to get assigned. क्योंकि मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कई रेडी प्रोसेसेस होंगे. So therefore the other process, one process तो run होगा CPU पर. So then what is going to happen to the other process? The other processes has to wait. So that state is called waiting state. फिर उसके बाद देखिएगा terminated. मतलब जब प्रोसेस ने अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर चुके, it has finished its execution, there are no more instructions to be executed, so therefore we say it is terminated state. It is terminated state. तो terminated state में क्या होगा? रिसोर्स डीएलोकेशन होगा. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिसोर्स डीएलोकेशन, जो रिसोर्सेस आपने एलोकेट किए थे वो रिसोर्सेस डीएलोकेट हो जाएंगे. सो बॉयज एंड गर्ल्स, द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज दैट न्यू स्टेट में रिसोर्स एलोकेशन होगा और टर्मिनेटेड स्टेट, कंप्लीटेड स्टेट में रिसोर्स डीएलोकेशन होगा. तो बाकी के डिफरेंट स्टेट्स, द प्रोसेस में भी परफॉर्मिंग IO और वेटिंग इन द रेडी क्यू और मे बी परफॉर्मिंग एग्जीक्यूशन ऑन CPU. तो जो state transitions होंगे, the transitions are the events of going for the process from one state to another state. The event transitions होंगे वो एक diagram form में होंगे, and that diagram is called process state transition diagram. That diagram is called
प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अब यहां पर हम स्टडी करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. सो हियर वी विल राइट प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. ठीक है, अंडरलाइन करेंगे इसे. So let me also give you a note here that this is an important topic. So what are the different states in which the process can be in during its lifetime? Let us start. The very first state जो हमने कहा वो है new. The process is getting created. The process is getting created. After new, where will the process come to? The process will come to a state called ready. Ready का मतलब है it is waiting for a chance to get attached to CPU. It is waiting for a chance to get assigned to CPU. That is called ready. So मतलब यहाँ पर एक मेमोरी का क्यू होगा जिसका नाम होगा ready queue. वहाँ पर प्रोसेस वेट करेगा. So ready state. Ready state से देखिएगा whenever it become ready to run on CPU, right? So it get dispatched onto CPU where it changes its state to what is called running. अब जब प्रोसेस रन हो रहा है सीपीयू पर, I can have several transitions. Like for example, running, the process may get terminated. It has completed its execution. तो प्रोसेस कहां जाएगा? Terminated. या अगर रनिंग में हो, प्रोसेस नीड आईओ ऑपरेशन, तो फिर वो प्रोसेस आएगा वेटिंग स्टेट या ब्लॉक स्टेट. वेटिंग स्टेट या ब्लॉक स्टेट. नहीं, अगर प्रोसेस आफ्टर कंप्लीटिंग वेटिंग ब्लॉक ऑपरेशन it will come back to ready state. These are the valid transitions, boys and girls. This is called event satisfaction. Event satisfaction. Event मतलब the event for which it is waiting, like IO event होगा या system call completion का event होगा या फिर कोई एक resource request का event होगा. Whatever event it was waiting earlier, whenever it is completed, तो process कहाँ आएगा? Ready state पे आएगा. अब बच्चों यहां से क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे. ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड आंसर द क्वेश्चन. सी ऑन बोर्ड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज this diagram which I have drawn so far. So if you want me to label, I will label it also before I start the questioning. Let me label it. So this is called create. This is called schedule. ठीक है? And this is completion. And this is like input output or system call or maybe some resource request like this. So all these are called event. And that event completion I will come over here. So I will have to basically remove this and also write with the same ink, event satisfaction. चलिए, event satisfaction. Event satisfaction. ठीक है? अब बच्चों first question, my first question coming up, let us see how many of you will be able to answer. The first question is, listen to me. The diagram which I have shown here so far, the diagram, मतलब और transition बाकी है. जो डायग्राम मैंने अब तक यहाँ पर उतारा है, the diagram which I have shown here, does it represent a multi-programmed operating system or does it represent a uni-programmed operating system? चलिए बताइएगा, चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा. कमल, हर्षित, पवन कुमार, राठौड़, अनुपम, tell me, those who are sincerely and seriously preparing for GATE, answer the question. जो डायग्राम मैंने अब तक यहां पर उतारा है, does it represent a uni-programmed OS or does it represent a multi-program OS? Simple question. Does it represent a uni-programmed OS or does it represent a multi-program OS? Come on, boys and girls. Multi-program, that's right. Pawan Kumar is correct. On what basis? Pawan, on what basis can you say that this is multi-program?
ये कौन से बेसिस पर हम बोलेंगे कि मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन से, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट से हम बोलेंगे दिस इज मल्टी प्रोग्राम? Mokshit Patel is saying both. No, not both. Mokshit Patel, no, it is not both. I will tell you. सुनिएगा, Pawan, please tell. On what, because of which state are you saying that this is multi-program? Pawan Kumar, no, that is not one human architecture, no. Which state I am saying? कौन से state के basis पे, कौन से state के basis पर आप बोल रहे हो कि ये मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? नो प्रॉब्लम राकेश, यू कैन कंटिन्यू. सप्तक दास इज करेक्ट. सप्तक दास, रेडी स्टेट. बिकॉज ऑफ रेडी स्टेट वी आर कंपेल्ड टू से दैट, बिकॉज ऑफ रेडी स्टेट के बेसिस पर हम बोलेंगे कि दिस इज ए मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. क्यों? क्योंकि यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में रेडी स्टेट नहीं होगा. क्यों? यूनी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक प्रोसेस होगा मेमोरी में. रेडी का मतलब क्या है? रेडी का मतलब है देयर आर मल्टीपल रेडी टू रन प्रोग्राम्स, देयर आर मल्टीपल रेडी टू रन प्रोसेसेस. सो दैट इज द व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्राम. अब यहां एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम कैसे दिखेगा? हाउ डज द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ए यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लुक लाइक? चलिए वो भी डायग्राम उतार लेते हैं, वो भी डायग्राम बना लेते हैं कि हाउ डू a uniprogrammed operating system diagram looks like. Come on. So here let me draw here. So let us write here process state diagram of uniprogrammed OS. Process state diagram of uniprogrammed OS. Look at that. Uniprogrammed OS. चलिए स्टार्ट करेंगे. Listen here, boys and girls. The very first state there we can have is also new. वहां पर भी न्यू स्टेट होगा. क्यों? क्योंकि वहां पे भी आपको प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करना होगा. So I have to create the process. So new it will go to ready. Sorry, no ready. न्यू से सीधा रनिंग में आएगा, रेडी नहीं रहेगा वहां पर, डायरेक्टली रनिंग में आएगा क्योंकि एक ही प्रोसेस रहेगा मेमोरी में. न्यू डायरेक्ट टू रनिंग, ये एक डिफरेंस है. And from running, I can have, like earlier occasion, terminate. Right? And from running, the process may require IO operation, बिल्कुल हो सकता है. Right? Or maybe any resource request. And whereupon for which the process will go into block state, waiting or block. And when IO is over, listen to me boys and girls, when IO is over, event is over, the process will come back to running state. This is event satisfaction. Or let me write with different ink. This is create. This is create and schedule and dispatch. Create and dispatch. This is completed. ठीक है, this is IO request, so I will mark it with this ink. So IO or resource request, and this event satisfaction. Event satisfaction. So boys and girls, dear students, point to be noted, point to be understood is that this is called the process state transition diagram of a uni-programmed operating system like DOS. Got it? You have to be extremely careful. तो ये डायग्राम में ये और दूसरे प्रीवियस डायग्राम में अगर आप देखो तो डिफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू रेडी. यहां पर जो साइकिल फॉर्म हो रही है, दिस साइकिल इज नॉट देयर, दिस साइकिल इज अ रिड्यूस साइकिल हियर. लुक एट दिस रिड्यूस साइकिल. There is no ready state. So this is multi-program, that is uni-program. This is multi-program, this is uni-program. अब second question पूछा जा रहा है आपसे, please understand. Second question. हमने पढ़ा, पिछले क्लासेस में देखा कि multi-programming is of two types. हमने पिछले क्लासेस में देखा multi-programming is of two types. Nagendra Singh, I will tell you, have some patience.
सो मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑफ टू टाइप्स. क्या दो टाइप्स के है? दो टाइप्स की मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो है, वन इज नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा? नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग इज नो फोर्सफुल एलोकेशन, डीएलोकेशन. नो फोर्सफुल डीएलोकेशन. हमने कहा कि नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच में रनिंग प्रोसेस विल लीव द सीपीयू वॉलंटरीली, and there are two conditions for voluntary release. Number one, when it completes. Number two, when it go for IO. यही दो कंडीशन में प्रोसेस रिलीज करेगा सीपीयू को, एंड दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच. और प्रीएम्प्टिव अप्रोच में फोर्सफुल डीएलोकेशन होगा. तो आपने सोच समझकर बताना है यहां पर मुझे डायग्राम में. सुनिएगा ये डायग्राम, अब जो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का इलस्ट्रेशन है यहां पर, इज दिस ए रिफ्लेक्शन ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग? बोलिएगा, is this reflecting non-preemptive approach of multi-programming or preemptive approach of multi-programming? ये सोच समझ के बताइएगा. Come on, that's important. Does it reflect non-preemptive approach or preemptive approach of multi-programmed operating system? Come on, boys and girls, very interesting. Very interesting. Let me see who will answer. Diagram which is shown on board, this is a 1 mark question. Does it represent non-preemptive or preemptive? Yes, Rakesh Joshi is correct. Non-preemptive. सर कैसे non-preemptive है? Very simple. क्यों non-preemptive है? देखिएगा on board. Running process is leaving the CPU in two cases. Case 1 when it require IO or when it completes. This is voluntary release. ये जो दो conditions है voluntary release है. So therefore this is non-preemptive. Absolutely correct. Non-preemptive. अब next question आएगा. नागेंद्र सिंह, बी केयरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो ये है थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमने? इज इट मल्टी प्रोग्रामिंग और यूनि प्रोग्रामिंग? हमने कहा है मल्टी प्रोग्रामिंग. यूनि प्रोग्रामिंग का डायग्राम हमने दूसरे स्लाइड में देखा. फिर हमने कहा इज इट नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव, और आपने कहा नॉन प्रीएम्प्टिव. बिल्कुल ये नॉन प्रीएम्प्टिव है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, देखेंगे कौन आंसर करेगा. थर्ड क्वेश्चन इज, if you want to transform this diagram, if you want to convert this diagram from non-preemptive to preemptive, listen to me carefully. अगर ये जो non-preemptive है इसमें आप preemption ऐड करना चाह रहे हो, if you want to transform this diagram to make it preemptive also, then what is the transition? मैं पूछ रहा हूँ, transition arrow, what is the transition that I need to add going from which state to which state? Come on, answer me. कौन से state से कौन से state पर transition ऐड करना होगा for converting this diagram, for making this diagram from non-preemptive to preemptive? Come on, answer me, boys and girls. बोलिएगा आंसर क्या होगा? If I want to convert it from non-preemptive to preemptive, get question है. अगर आप PYQ उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं वो PYQ में है. शिवम तिवारी, नो शिवम, it never, प्रोसेस कैन नेवर मूव टू न्यू स्टेट. न्यू स्टेट पे कभी भी नहीं आएगा. न्यू स्टेट में कभी भी नहीं आएगा. शिवम तिवारी, प्लीज हैव क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट. कोई भी ट्रांजिशन से न्यू स्टेट में कभी भी नहीं आएगा प्रोसेस. आप न्यू स्टेट से बाहर ही आओगे, अंदर नहीं जाओगे आप. यू कैन नॉट गो बैक टू न्यू. आर यू गेटिंग? सो प्रोसेस इज रनिंग. प्रीएम्पशन का मतलब फोर्सफुल डीएलोकेशन. प्रोसेस से टाइमर इंटरप्ट, टाइमर हैज गॉन आउट, right? Timer has gone out, so process has to get preempted. So where should it go to? It cannot go to terminate. It cannot go to block. Process say I want to be in ready state again to run on CPU next. Process बोलेगा मैं ready हूँ. ठीक है, मुझे टाइम आउट इंटरवल के बेसिस पर आप मुझे प्रीएम कर रहे हो, लेकिन आई एम अगेन रेडी टू रन. वैसे एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आके हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट जनरेट किया, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस रन हो रहा है, उसे प्रीएम्प्ट होना पड़ेगा. लो प्रायोरिटी प्रोसेस बोलेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल लीव द सीपीयू एंड अगेन बट आई एम अगेन रेडी टू रन. तो मतलब ये है, एज मेनी पीपल हैव सेड, आई नीड टू ऐड ए ट्रांजिशन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई नीड टू ऐड ए ट्रांजिशन फ्रॉम रनिंग टू रेडी. दिस इज कॉल्ड प्रीएम्पशन. दिस इज कॉल्ड प्रीएम्पशन. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट प्रीएम्पशन. और ठीक है, पूरा लिख देंगे प्रीएम्पशन. This preemption may be because of time or maybe because of priority. तो बच्चों ये है पॉपुलर 5 स्टेट प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम.
5-state diagram, 5-state. There are 5 states. Look at this. New, ready, running, block, and terminate. New, ready, running, and block. Terminate. So this is a process state transition diagram of a preemptive based multi-programmed OS. Preemptive based multi-program OS. ठीक है ना? यहां पर कुछ और पॉइंट्स मुझे आपको बताना है, so please follow carefully. वो ये है कि when the process is in ready state, boys and girls, please learn this and try to memorize. When the process is in ready state, it is in main memory. When the process is running on CPU, it is in main memory. When the process is waiting or block, it is in main memory. It is in main memory. RAM में होगा, main memory में होगा. लेकिन जब process new state में है, it is in the process of getting into memory. So you cannot say strictly speaking new is in memory. उसी तरह process जब terminate state में होगा, so it is going out from memory. So you cannot say strictly speaking it is in memory. It is getting deallocated of all the resources. So while it is in ready state, running state, block state, it is perfectly 100% in memory. In memory. And now the second part of process state transition diagram. So please follow carefully. अब बात होगी second part of process state transition diagram की. वो ये है कि sometimes process needs to get moved out from disk to from memory to disk. That is called suspension. That is called suspension. स्लाइड में लिख के नोट बताऊंगा ताकि आपके नोट्स के लिए आसानी हो. यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा. Sometimes the operating system has to move out the process from memory onto disk, right? Onto disk. Now this is due to degrading performance. जब भी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर मूविंग आउट द प्रोसेस फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क. So this operation, listen to me, this operation is known as process suspension. And sometimes some people even call suspension as swap out. Yeah, some people even call it as roll out. So move out, suspend, swap out, roll out, these are all same. So क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि sometimes what happens is operating जो computer system का जो performance है वो degrade हो जाएगा. क्यों? Because of lack of resources की वजह से performance degrade होगा. तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, rather than suspending some of the partially completed processes, कुछ processes को, not all, some processes, maybe suppose if imagine you have 100 processes, so out of 100 processes it will suspend let us say some 20 processes or 30 processes. So that activity is called process suspension. The act of moving out the process from memory and putting onto disk temporarily, that is called suspension. बाद में after some time when operating system feel that now I can bring those processes back, I will resume the processes back. That is called process resumption. Roll out, roll in, swap out, swap in. ठीक है? Suspend, resume. Right? So later on, so I will add that point also. Please understand. I will add that point also. Later on, the suspended processes are resume. Resume का मतलब है swap in या फिर roll in back to memory. Suspended processes are rolled back to memory. So this event is called process suspension and resumption.
तो अब नाउ इन द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन से स्टेट से प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं। While the process is in memory, ready state, running state, block state, हम कौन से 3 स्टेट से, क्योंकि न्यू का मतलब इट हैज नॉट येट फुल्ली एंटर्ड इनटू मेमोरी, टर्मिनेट का मतलब इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो न्यू और टर्मिनेट को सस्पेंड करने का कोई मतलब ही ना रहा। तो जो प्रोसेसेस रेडी में हैं, रनिंग में हैं, ब्लॉक में हैं, हम उन्हीं को सस्पेंड कर सकते हैं, उन्हीं को सस्पेंड कर सकते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज अंडरस्टैंड, वी कैन सस्पेंड ए रेडी प्रोसेस, वी कैन सस्पेंड ए रनिंग प्रोसेस, वी कैन सस्पेंड ए ब्लॉक प्रोसेस। ये तीनों स्टेट से हम प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अमंग दीज 3, ये तीनों स्टेट में से मोस्ट डिजायरेबल स्टेट फॉर सस्पेंशन आप बोलोगे रेडी है। क्यों? कि रनिंग में प्रोसेस इज ऑलरेडी यूटिलाइजिंग द सीपीयू, व्हाई शुड वी डिस्टर्ब, व्हाई शुड वी डिस्टर्ब। डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि थ्रैशिंग हो रही है। अगर आपको थ्रैशिंग का कॉन्सेप्ट पता हो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो नागेंद्र सिंह। परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन के कई रीजन हो सकते हैं, देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस। का मतलब परफॉर्मेंस खराब हो रहा है सिस्टम का, डिग्रेड होना मतलब खराब होना, राइट? लाइक थ्रूपुट डिक्लाइन हो रहा है, थ्रूपुट रिड्यूस हो रहा है, राइट? सीपीयू इज सिटिंग आइडल, ये है डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस। तो ये होने की वजह क्या है? ये होने की वजह मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ज्यादा होगी, ये है डिग्री, ये है डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस। तो चलिए, तो हम कह रहे थे द मोस्ट डिजायरेबल स्टेट इज रेडी। ब्लॉक मतलब इट इज वेटिंग फॉर आईओ, इट इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू हैपन, सो व्हाई शुड आई सस्पेंड, इवन दो यू कैन, बट नॉट डिजायरेबल। डिजायरेबल इज रेडी। तो अगर हम रेडी स्टेट से प्रोसेस को सस्पेंड करें, लिसन टू मी बॉयज एंड गर्ल्स, इफ आई सस्पेंड ए प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट, it will come to a state called suspend ready. Suspend ready. I'm showing with a different ink. And then when I bring the process back into memory, this is called resume. So I will name these transitions in a different ink. I will name these transitions with a different ink. Please follow carefully. So this is suspend. This is suspend. And this is resume. उसी तरह, if you suspend a running process, it cannot be suspend running, is it not? So it again go to ready, suspend ready. It again go to suspend ready. So these also suspend. Like that, you can have suspension from block. I'm not drawing here, but there is no space. Otherwise, you can basically have waiting all state. Ravi Mehra, in the month of January, I think, in the month of January. Okay. So this is the concept. This is called the process state transition diagram. So this diagram which is shown is a famous 5-state process state transition diagram. अगर कुछ भी doubt अगर हो, any doubt if you have in this diagram, please ask. If you have any questions or any doubt based on this diagram, please ask, boys and girls. I'm ready to take up question before I give some PYQs based on this process state transition diagram. Before I give any question based on process state transition diagram, if you have any questions or any doubt, please ask. बोलिएगा, any question, any doubt before I give a question? Shall we take one question similar to the question which was asked in GATE 2024 on this process state diagram? Process state transition diagram के ऊपर there was a question in one of the PYQ 2024 के PYQ में. ठीक है, यहाँ तक clear है, very good. चलिए question लेंगे. Let us take one question. देखिएगा, same diagram जो मैंने present किया, same diagram है. New, ready, admitted, new to ready, and then running back to wait back to ready, and then interrupt, exit, completion, terminate. Same diagram है. अब next हम देखेंगे one question based on whatever we discussed. I'm putting some transitions here in the options. I'm putting some transitions in the options. आपको बताना होगा कि among them which are valid and which are invalid. Which are valid and which are invalid. आपको सोच समझ के बताना होगा. Like for example, if I say
is option A. Option B. Come on, look at this question, boys and girls. So for this question, you will have to indicate which of them are valid and invalid transitions. Come on, answer me. I will give you 2 minutes of time. 2 minutes of time for all the F options. A, B, C, D, E, F. 6 options. You tell which of them are valid and which of them are invalid. Come on, do it. Okay. Come on, all the people, please participate. I've added one more. I've added one more. Let us start. Let us start, boys and girls. Please have a look.
Let us start this. Timer out will cause the process to go from running to ready, perfectly valid. Input output completion will cause the process to go from block to ready. Yes, block to ready, perfectly correct. IO completion. Next, event satisfaction. जब भी event satisfy होगा तो process running से ready में जाएगा. No, it is wrong. It will go from block to ready again. It will go from block to ready. So therefore it is wrong. Exit ready to terminate. No, running to terminate होगा. Running to terminate, wrong. IO completion. Will it cause the process to go from block to terminate? Never. Block to terminate कभी भी transition नहीं होगा. ये transition कभी भी नहीं होगा. Resource deallocation. Will it cause the process to go from ready to block? No. Resource deallocation में मतलब पूरे resource से जब आप deallocate करोगे तो maybe it will go from running to terminate. Running to terminate अगर होता तो ये हम correct करते. Running to terminate. Create new to ready. बिल्कुल correct option. बिल्कुल correct option. So this is the approach of solving such questions. ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. वी विल कंसिडर नेक्स्ट कॉल शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग मतलब नॉट सीपीयू शेड्यूलिंग. सीपीयू शेड्यूलिंग नेक्स्ट में आएगा. तो यहां पर शेड्यूलिंग क्यूज है, मतलब शेड्यूलिंग क्यूज का डिस्कशन होगा. तो बिफोर कमिंग टू दिस डायग्राम लेट मी राइट डाउन हियर. सो व्हाट आई वांटेड टू टेल इज द टॉपिक ऑन शेड्यूलिंग क्यूज. शेड्यूलिंग क्यूज एंड क्यूइंग डायग्राम. एक और डायग्राम है हमें स्टडी करना है जिसका नाम है क्यूइंग डायग्राम. क्यूइंग डायग्राम शेड्यूलिंग क्यूज एंड क्यूइंग डायग्राम. तो सुनिएगा बच्चों, कहना यह है कि every multi-programmed operating system maintains two types of queues. Every multi-program operating system. Sangam Srivastav. Let us see how much we can cover. Let us see how much we can cover. Let us not make any commitments like what we are trying to ask. Right? We'll try our level best to do the best possible. देवारुण दास, यू आर सेइंग कुछ रिसोर्स तो डीअलोकेट होगा ना, मतलब आई डिडंट गेट यू. देवारुण दास, कैन यू आप फिर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो एलॉबरेट करके कि क्या मतलब पूछना चाह रहे हो आप. रिसोर्स डीअलोकेशन मतलब यह है कि वी आर ट्राइंग टू टर्मिनेट द प्रोसेस. रिसोर्स डीअलोकेशन का मतलब है देवारुण दास, रिसोर्स डीअलोकेशन का मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू टर्मिनेट द प्रोसेस. तो प्रोसेस कहां से टर्मिनेट होगा? रनिंग स्टेट से होगा. तो बच्चों पॉइंट रिमेंबर करने का ये है कि हमेशा टर्मिनेशन जो होगा ना प्रोसेस का, वो हमेशा याद रखिएगा, प्रोसेस कैन गेट टर्मिनेटेड ओनली फ्रॉम रनिंग स्टेट. प्रोसेस कैन नेवर गेट टर्मिनेटेड. प्रोसेस कैन नेवर गेट टर्मिनेटेड फ्रॉम रेडी स्टेट और ब्लॉक स्टेट, और रेडी और ब्लॉक. रेडी और ब्लॉक से टर्मिनेट कभी भी नहीं होगा. तो यहां पर मैंने एफ ऑप्शन में जो लिखा था पिछले स्लाइड में, रिसोर्स डीअलोकेशन का मतलब आई एम ट्राइंग टू से हियर टर्मिनेशन, कंप्लीशन, एग्जिट. एग्जिट इसका मतलब है कंप्लीशन या एग्जिट. सस्पेंड जब करोगे आप प्रोसेस को तो प्रोसेस के पूरे रिसोर्सेस या जितने चाहे आप रिसोर्सेस डीअलोकेट करोगे, लेकिन प्रोसेस एक्टिव रहेगा. इट विल बी देयर ऑन सेकेंडरी स्टोरेज टेम्पररी. प्रोसेस सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जनरली इन द क्लासरूम, आपने फिजिकल क्लासरूम में देखा होगा, समटाइम द टीचर में सस्पेंड ए स्टूडेंट. सस्पेंड का मतलब क्या होगा? क्लासरूम से बाहर कर देगा टीचर फॉर टेम्पररी रीजन, पनिशमेंट, सिंपल टेम्पररी पनिशमेंट के लिए. राइट? हाँ, ब्लॉक स्टेट से भी नागेंद्र सिंह होगा. प्रोसेस कैन गेट टर्मिनेट, कैन गेट सस्पेंडेड फ्रॉम ब्लॉक स्टेट ऑल्सो. सो फ्रॉम ब्लॉक इट विल गो टू सस्पेंड ब्लॉक. फ्रॉम सस्पेंड ब्लॉक इट मे कम बैक टू ब्लॉक. फ्रॉम सस्पेंड ब्लॉक इट मे कम टू सस्पेंड रेडी. यहां पर डायग्राम नहीं है, आप बाद में देख सकते हो. इन द फ्रॉम द टेक्स्ट बुक यू कैन सी.
Vinay Kaloji, if the process is in ready state and if you forcibly take away some resource from it, then it can go to block state. लेकिन एक वो conflicting criteria है, conflicting parameter है, क्योंकि as per some of the resources, as per some of the content on the internet, process can get blocked from ready state. लेकिन textbook का convention अगर आप देखो from Galvin or any other textbook, there is no transition from ready to block. Lekin I have a source, an internationally acknowledged source. As per that research paper, the process can get blocked from ready state also. ये controversial question था in GATE 2024 में, transition from ready to block. Some sources say it is possible, some sources say it is not possible. So it's a controversial conflicting criteria. Like in 2023 GATE also there was a conflicting question. Which of the following scheduling techniques suffer or do not suffer from starvation? Some textbooks say FCFS does not suffer from starvation, and some people say FCFS suffer from starvation. The controversy GATE committee has accepted. I used to say it does not suffer. FCFS by default does not suffer from starvation. As per Stallings, as per Tannenbaum textbook, it does not suffer. लेकिन IIT ने पहले कहा suffer, it suffers, लेकिन बाद में उसने accept किया, then they say it is does not suffer also is correct. उसी तरह 2024 GATE में भी एक question था. I gave with the options, I gave with the concept like process can get blocked from ready. That is based on some research paper of ACM, Association of Computing Machinery. ACM is a very popular non-profit organization that deals with publications or research of computer science papers. Yeah, I showed that in the class. So, but anyway, the IIT committee has not accepted. The decision is well taken, there is no problem. But that at the same time that ACM research paper also cannot be discarded, that their condition also cannot be discarded. So that's what I say, that is controversial. Convoy effect is a different phenomena. Debaran Das, convoy effect is altogether a different phenomena. It does not having related to starvation. Convoy effect will lead to ineffective utilization of resources, inefficiency of resources. Convoy effect, that is a different phenomena. तो चलिए अब आएंगे यहाँ पर. तो ये भी क्वेश्चन हो गया है, एड्रेस कर लिए हम. Next I am telling the important, these are called operating system data structures. So let me write down. These are called operating system data structures. Scheduling queues is nothing but OS data structures. These are operating system data structures. So therefore I am saying every multi-programmed operating system maintains two types of scheduling queues in the memory. Two types of scheduling queues. What are they? Number one, it is called ready queue. The ready queue. The queue is the same concept of queue which you studied in data structures. जो queue का concept आपने data structures में पढ़ा होगा, वही queue का concept है, scheduling queues. So then second queue is block queue. Block queue. Block queue. Block queues are also called sometimes device queues. Device queues. ठीक है. What is ready queue? Conceptually, ready queue looks like this. Let me show. Conceptually, ready queue looks like this. And this is the ready queue pointer. It's a queue, linked list. इस तरीके से. So it contains PCBs of the processes which are ready to run. PCBs of processes like this. So अगर आप नोट की तरह मुझे लिखने के लिए कहोगे, this is nothing but a list. List मतलब linked list. List of PCBs, process control blocks of ready processes. Of ready processes. मतलब अगर conceptually अगर आप पूछो, ये PCB of process I है, the ready queue pointer. This is PCB of process I. एक PCB में एक pointer होगा that will point to the next PCB. Linked list है ये, singly linked list या doubly linked list या circular linked list, whatever, like this.
This is PCB of process J. This PCB of process K, like that. Linked list of PCBs of those processes that are essentially nothing but ready to run on CPU. So essentially and conceptually, ready queue represents nothing but your ready state. आपका जो ready state है state diagram में, ready state is conceptually represented by ready queue. What is ready queue contain? List of PCBs of all those processes that are essentially ready to run. Linked list of PCBs of those processes that are ready to run. फिर उसी तरह block queue. हर IO device, every IO device will be associated with its own queue. और वो queue में फिर PCB रहेंगे. PCBs of which processes? Of those processes that are blocked onto that device. मतलब अगर conceptually समझने की कोशिश करो आप, तो it will look something like this. Let's say this is one IO device. This is another IO device, like this. So every device queue, every device will have its own queue. Like this. Will have its own queue. So this is the device Q1, device Q2, and like that it goes. So this will again contain PCB of processes which are blocked onto that device, something like this. What is this? This is input output device 1. This is input output device 2, and so on. सर मेरा C प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है. हाँ बिल्कुल, whenever you complete any subject you should start the mock test, or first topic wise test and then grand test and then mock test. ठीक है ना अनुराग तिवारी? You can start for good practice. अब सुनिएगा यहाँ पर, every IO device, जितने भी IO devices होंगे सिस्टम में, हर एक IO device की अपनी क्यू होगी. So IO device 1, this is a queue, ready queue. What does it contain? List of PCBs. Again, same thing. List of PCBs of those processes that are blocked onto that device. ये device के लिए processes block हुए हैं, ये device के लिए ये processes block हुए हैं. तो मतलब running state से कभी भी कोई process block होना है IO device पर, तो that will go into this particular queue, that device queue. So these are the two queues which are maintained in memory. Please remember, ready queue is in main memory. Block queue is also, device queue is also in main memory. लेकिन पिछले process state transition diagram ने हमने देखा, sometime the processes are getting suspended. So उसके लिए भी एक queue होना चाहिए जहां पर हम processes को store करेंगे, suspended processes को store करेंगे या रखेंगे, वो है suspend queue. तो next slide में मैं आपको बताऊंगा. So scheduling, there are two scheduling queues that are there in on disk. So यहाँ पर हम लिखेंगे on disk queues क्या है? On disk queues. What are the queues on disk? On disk queues. सुनिएगा. There are two types of on disk queues. The one is called suspend queue, and the other is called job queue, and sometimes people even also call it as input queue. Both are essentially same conceptually. So what does suspend queue contain? So imagine again this is a disk, or maybe I have to show it like a queue, right? So therefore I will show again the same diagram conceptually. This is a suspend queue. This is a job or input queue. So here I am going to say this will contain list of processes, list of suspended processes. List of suspended processes will be on suspend queue. So here I may have some processes, some P, PJ, PL, something like this. So these on disk. उसी तरह
What will this contain? This queue will contain, let me mark the comment with a different ink. What does this queue contain? Job queue or input queue? List of programs ready to be loaded. Ready to be loaded into memory. जो प्रोग्राम्स मेमोरी में लोड होने के हैं, जो प्रोग्राम्स आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, एंड यू कैनॉट लोड ऑल द प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी. लेट अस से like 100 program want to come into main memory, but you cannot bring all 100. I can bring only 70. Then where should remaining 30 be? The remaining 30 should be on this queue, job queue or input queue. So programs that are ready to be loaded in main memory, if required, I need to store it. लेकिन अगर आप सारे के सारे programs memory में ला सकते हो एक साथ, then basically you don't require any job queue or input queue. Don't require any job queue or input queue. Yes, Nagendra Singh, every input output device is a hardware device. So for every hardware device like IO, you should have a corresponding queue containing the PCBs of the processes that are basically got blocked while performing IO operation onto that device. That is correct. ठीक है, ये है job queue. So boys and girls, combining all these queues, you can basically have a diagram which is called state queuing diagram or simply queuing diagram. चलिए study करते हैं what is a queuing diagram. Have a look on board. Look at this. So these are the queues, boys and girls. These are queues taken from the Galvin textbook diagram from Galvin textbook. These are ready queue. देखिएगा head pointer है, tail pointer है, linked list है वो. Is a PCB7, PCB2 and like that it goes. Head pointer is pointing to the first PCB and tail pointer is pointing to the last PCB. Last PCB का pointer store करने की वजह ये है कि later if you want to add a new PCB into ready state या ready queue, then I don't need to traverse. आप directly tail pointer से add कर सकते हो. यहाँ पे next पे आओगे आप add कर दोगे. So having a tail pointer facilitate basically addition of new PCB at the end of the queue. ठीक है, ट्रैवर्सल टाइम आपका बच जाएगा. उसी तरह देखिएगा वेटिंग क्यू है. दिस इज अ वेटिंग क्यू. सो प्लीज हैव a look at the waiting queue. Head pointer, tail pointer. This is waiting for some device, maybe for some device. अब नेक्स्ट देखिएगा. Look at this diagram. Please study this diagram for a while. 1 मिनट के लिए पूरा डायग्राम स्टडी कीजिएगा. Then we'll start the discussion. Have a look at this diagram. This is called state queuing diagram. This is the diagram which is called, let me write down here. This diagram is called state queuing diagram. ये शेड्यूलिंग क्यों है, क्यों हम शेड्यूलिंग बोलेंगे अभी आपको समझाऊंगा मैं. State queuing diagram. Why is this called basically process scheduling? We will study shortly. तो देखिएगा रेडिस क्यू. तो यहां पर हम मानेंगे कि we have some for example we have some job queue. Please follow. So this is my job queue. So new process will come into job queue and go into ready queue. So this is your ready queue pointer. This job queue. Ready programs to be loaded in memory. Programs ready to be loaded in memory. Programs ready to be loaded in memory. Right? Programs ready to be loaded in ready queue. अब ready queue में देखिएगा यहां पर this is the act of scheduling, schedule and dispatch. Schedule and dispatch. One of the ready process is selected and dispatched onto CPU. अब ये आपका हो गया terminate. ये आपका state हो गया terminate. अगर आप टर्मिनेट ना करो,
Suppose if the process running on CPU need IO operation, तब क्या होगा? इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हुआ, यहाँ पे इनपुट आउटपुट क्यू, दिस इज योर ब्लॉक क्यू, डिवाइस क्यू जो हमने पढ़ा अभी, ब्लॉक क्यू या डिवाइस क्यू. Whenever IO operation is over, it will come back to ready state. Look at the beauty of this diagram. अगर या process is allocated some time slice या time quantum, if time slice is expiring or time slice expired, the process will come back to ready state. Process will come back to ready queue. अगर process, parent process has created a child process, running process has created a child process, then till the child terminate, we are basically waiting for the child to terminate, right? If the child terminates the process, waiting process will come back to ready queue. Parent process will come back to ready queue. Wait for some interrupt to happen. Interrupt occurs, interrupt queue में add होगा. Then whenever the interrupt is happened or event happens, the process will come back to ready queue. So the beauty of this diagram. तो बच्चों मेरा अपना conviction है, मेरा अपना एक convention है. If you consider, listen to me carefully, if you consider operating system as a machine, abstract machine, then these are the components of the machine. ये queues जो है ना, वो operating system के components है that shows how the processes is moving from one queue to other queue. कैसे प्रोसेस एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मशीन डिफरेंट कंपोनेंट्स में मूव हो रहा है प्रोसेस फ्रॉम वन क्यू टू द अदर क्यू. दैट इज कॉल्ड स्टेट क्यूइंग डायग्राम. ठीक है, यहां पर एक क्यू मिसिंग है, वो भी बना लेंगे हम. क्यू मिसिंग है वो भी बना लेंगे. सस्पेंड क्यू, दिस सस्पेंड क्यू. So as I said, you can suspend a process from ready state. तो अगर आप यहां सस्पेंड करो, इट विल कम हियर. सस्पेंड ऑपरेशन, दिस सस्पेंड क्यू. और जब आप रेज्यूम करो प्रोसेस, विल कम बैक टू रेडी क्यू, दिस रेज्यूम ऑपरेशन. So this is the complete queuing diagram. So this diagram shows or talks about all the states of the processes also. कितने states है process के? New, ready, running, terminate, block, right, preempt, suspend, सभी के सभी ये डायग्राम में बताएंगे. So बार बार आपको कह रहा हूं, if you consider operating system as an abstract machine, then this diagram is showing nothing but all the components of that machine in the form of queues, job queue or input queue, the ready queue, block queue, suspend queue, interrupt queue, and so on. बोलिएगा, is the diagram clear? Is the concept and the diagram clear with regard to queues and queuing diagram? 2 queues in memory, 2 queues on disk. Any doubt, any question? If you have, please ask before I proceed. If you have any question or any doubt, please ask. Okay. So based on this queuing diagram, we are going to talk about something called schedulers and dispatcher. Schedulers and dispatcher. The last topic of process, this chapter by name process concepts में जो last topic है वो है schedulers and dispatcher. Okay, schedulers and dispatchers. First point I would like to tell you that scheduling, the word scheduling, the meaning of the word scheduling is to make a decision. Is to make a decision. And scheduler is that component of operating system that makes the decision. The scheduler is a component of operating system that makes decision. Scheduler is a component of operating system that makes
decisions. Okay. So if you look at, boys and girls, please have a look at the diagram again. Please have a look at the diagram again. ये diagram पर आप बताइएगा please. What are the possible places? What are the possible cues or places? What are the possible cues or places where decisions are made? देखेंगे कौन बताएगा answer. Again, I'm putting my question. What are the possible places or components or cues in this diagram where I have to make decision or where decision making is done? कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से क्यूज है जहां पर आपको डिसीजन मेकिंग होगी, जहां पर आपको डिसीजन मेकिंग होगी? सो व्हाट आर दिस? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, दैट्स इंटरेस्टिंग. What are the components in this diagram where decisions have to be made? Yes, job queue, ready queue, suspend queue. That is correct. Any other queue, Rakesh Joshi? Any other queue other than that? Kaloji is also saying ready queue 1. Tell me all the possible queues. All the possible queues. Tell me all the possible queues where I have to make decisions. All the possible queues where I have to make decisions are, all the possible queues where I have to make decisions are as follows. So I will write down here. Number 1. I have to make a decision on job queue first. I have to make decision on ready queue. Okay? Then I have to make decision on suspend queue. Then finally there is one more queue. Boys and girls, let me see who will answer. There is one more queue where I have to make decision. What is that? Let me see who will answer. One is job queue. The other is ready queue. This is another one is suspend queue. Suspend queue. Fourth queue. Yes, Rakesh Joshi is correct. Device queue or block queue. Device queue. Generally device queue. Generally device queue. These three and the corresponding component, I'm saying the corresponding component for making the decision is called scheduler. So I have schedulers, components of operating system that make the decision is called schedulers. So I have 3 schedulers as far as process management is concerned. For process management module, under process management module, I have 3 schedulers. And this scheduler for device, secondary storage devices or maybe for input output devices, I have device queue. This comes under device management, which is another module of operating system. Process management hai, memory management hai, IO management, yeah, device management. So this comes under device management. So under process management, we are going to study about these 3 queues. Yes, that is correct. Job queue, ready queue, suspend queue. So we have, I said, operating system components for these 3 schedulers. Operating system component for these 3 schedulers. Look at that. Here I have written is to make a decision. Scheduler is a component of operating system that makes decision. So as far as process management is concerned, there are 3 schedulers needed for these 3 queues. So what are they? They are called, let me write. They are called number 1, long-term scheduler. Long-term scheduler. We write in short LTS. Short-term scheduler. STS. And third, medium-term scheduler. Medium-term scheduler. MTS. 3 schedulers for 3 queues. So let us understand from the diagram which scheduler works on which queue. The scheduler that works on ready queue, deciding which ready process should run next onto CPU, is short-term scheduler. Short-term scheduler operates on ready queue. It operates on ready queue, deciding which ready process should run next onto CPU. Long-term scheduler, if at all present in operating system, will work on job queue to decide who should run next or who should get into main memory. That is long-term scheduler. So it operates on job queue or input queue. It operates on job queue or input queue, deciding which ready program should get into main memory. Next,
Medium term scheduler is responsible for deciding of process suspension and resumption, MTS. It operates on suspend queue, deciding who should get suspended, who should be brought into main memory. Medium term scheduling. Medium term scheduling. So long term scheduler, short term scheduler, medium term scheduler. These schedulers are named as long, short and medium based on the frequency of their activations. सबसे ज़्यादा very less frequency, very fast fast frequency से short term scheduler run करेगा, short frequency से. ये rarely use होगा long term scheduler, so long frequency. In between that is medium term. ठीक है ना? यहां पर जो जॉब क्यू है आपका, ब्लॉक क्यू जो है, यहां पर आपका डिवाइस शेड्यूलर रहेगा, डिवाइस शेड्यूलर, डेव शेड्यूलर. It operates here onto the device. So boys and girls, this is about the schedulers. और एक लास्ट मॉड्यूल जो है बचा हुआ आपको हमें पढ़ने का है, वो है dispatcher. So let us study about dispatcher. Can anybody write down in the chat box what is the role of dispatcher, what is the function of dispatcher in short? So here we will say. So let me write. Here I am writing dispatcher. Does anybody know what is the function of dispatcher? Does anybody know what is the role, function of dispatcher? Come on. What is the role of dispatcher? Yes, Rakesh Joshi is correct. Vinay Kaloji is also correct. Dispatcher carries out, let me write. Dispatcher carries out the activity of context switching. Context switching. Context switching. Context switching activity involves loading and saving context switching, loading and saving the PCBs of processes during process switch onto CPU. Diagrammatically understand करने की कोशिश करेंगे. So imagine, for example, this is ready queue and this is some block queue and this is some block queue. And let us also imagine that this is CPU. So please follow carefully, boys and girls. I'm saying that this is ready queue and this is CPU and this is some device queue. Already some processes are here, PI, PJ, PK, PL. And imagine some process PR is running on CPU. And here I have some processes PA, PB, PC, waiting for some IO device. Let's say the device is here. Let's say this is the device. Now observe this scenario. This is the IO device. Okay? Now understand. Imagine some process PR is running on CPU. So this process after some time needs to perform IO operation. So it has to be added to this device. यहाँ पर आप ये process को यहाँ से remove करना है और ये device में add करना है. मतलब ये जो PCB है process का या यहाँ पर save करना है. The context which is active on CPU has to be saved here.
So somebody has to do this. So who will, this is called saving PCB. Saving PCB. So who will do this? This will be done by dispatcher. This will be done by dispatcher. This will be done by dispatcher. Saving the PCB. ठीक है? तो जब आप सेव करोगे PCB को यहां पर, सुनिएगा बच्चे, गौर से सुनिएगा. When you save the PCB here, CPU become idle. Sorry. CPU become idle. If you have saved the PCB, CPU become idle. जब CPU idle होगा, तो आपने डिसाइड करना होगा कि who is going to run next. Who is going to run next? So who will decide that? Short term scheduler. तो आप short term scheduler को activate करोगे, this short term scheduler. It will run on CPU to decide which ready process should run next. Suppose if you decided PJ is going to run next, PJ. So somebody should be there to delete the PCB from ready queue and load it onto CPU. This is load. Load PCB. So who is going to do this? This is also going to be done by dispatcher. This is also going to be done by dispatcher. Got it? This is also going to be done by dispatcher, loading the PCB. The dispatcher is going to run on CPU and decide to save it first and then load the PCB. So this activity of saving and loading is done by dispatcher module. Short-term scheduler will decide who should run next. So ये जो activity है total, earlier the context of PR was active on CPU. Now PJ will become active. So हम बोलेंगे the CPU got shifted from PR to PB. That is called process switch. That is called process switch. So जब process switch होगा CPU पर, so that will result in saving the PCB of preempted process and loading the PCB of the next process to run on CPU. So ये जो activity है of loading and saving is carried out by dispatcher. The activity to decide who should run next is done by short-term scheduler. तो short-term scheduler सिर्फ decide करेगा और dispatcher वो decision को carry out करेगा. So ये activity का काम है context. This activity का नाम है context switching, carried out by this module called dispatcher. And the time taken by dispatcher, let me write down as a point. The time taken by dispatcher, the time taken by dispatcher to perform context switching or context switch activity, to perform context switch activity is known as context switch time. Context switch time. Context switch time या फिर इसे आप बोलोगे dispatch latency. The time spent by the dispatcher in loading and saving the PCB is called context switching time. So if you call this as some T1, you call this time as T2, right? So T1 plus T2 is called context switch time. This is also called dispatch latency. Is also called dispatch latency. CPU scheduling overhead is also sometimes called CPU scheduling overhead. तो बोलिएगा बच्चों, is this everything clear? Dispatch latency, context switch overhead, या फिर आप बोलोगे CPU scheduling overhead, all these are related terms. So this is called dispatcher. This is called dispatcher. तो हमने चार कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है. एक है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड फोर्थ इज डिस्पैचर. हर एक के फंक्शनैलिटीज इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटर टॉपिक्स. तो बताइएगा अगर कुछ डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो कोई टॉपिक में, कोई इसमें, तो आप पूछ सकते हो. एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा. अब इससे पहले या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे हम. The degree of multi-programming, listen and answer this question. Degree of multi-programming is controlled by
is controlled by dash. Options are long term scheduler, short term scheduler, C medium term scheduler, D dispatcher. बोलिए, who controls degree of multiprogramming? Degree of multiprogramming का मतलब क्या है? What is the meaning of degree of multiprogramming? Let us write what is the meaning of degree of multiprogramming. What is the meaning of degree of multiprogramming? Degree of multiprogramming refers to number of registered processes with operating system. Mean the number of processes who has entries in the process table. एक टेबल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसका नाम होगा proc टेबल या प्रोसेस टेबल, जिसमें नंबर ऑफ एंट्रीज होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेसेस who have been loaded from disk to main memory for the purpose of execution. Those are called registered processes. ये है proc टेबल का स्ट्रक्चर. So number of entries equal to number of registered processes with the operating system. So this is called degree of multiprogramming. Like degree of the class refers to number of students registered with the class. Degree of the tree आपने पढ़ा होगा, degree of the graph पढ़ा होगा, उसी तरह degree of multiprogramming refers to number of processes registered with operating system. तो कौन control करेगा for high degree of multiprogramming और low degree of multiprogram के लिए कौन control करेगा? Come on, बोलिएगा please. Who controls? Long term, short term, medium term या dispatcher? Long term scheduler is responsible for loading and loading of the new programs into main memory. अगर वो ज़्यादा प्रोग्राम लोड करेगा तो डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग हाई रहेगी, अगर वो थोड़े प्रोग्राम लोड करेगा तो डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग लो रहेगी. So therefore, boys and girls, it is the long term scheduler that controls degree of multiprogramming. It is the long term scheduler that controls degree of multiprogramming. ठीक है? So this is all about the concepts related to processes. Concept related to processes जो है process concept का chapter. So with this we are ready to basically start with CPU scheduling. लेकिन उससे पहले एक और हमें concepts understand करने पड़ेगा related to process, और वो है threads and multi-threading, types of threads, benefits of threads and all other aspects related to threads. लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. लेकिन अभी हम देखेंगे क्वेश्चन. आई विल गिव यू वन क्वेश्चन राइट नाउ. यू ट्राई टू रेस्पॉन्ड टू इट. एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. कंसिडर ए सिस्टम हैविंग n CPUs and k processes. The value of k is greater than n. Value of k is greater than n. And here we say n is greater than or equal to 1. Then question is, what is the upper bound अपर बाउंड का मतलब है मैक्स, मैक्सिमम, एंड लोअर बाउंड का मतलब है मिन ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस that can be in ready, running and block. बोलिएगा. It's an interesting question और आप इसे वर्कआउट कर सकते हो, और वर्कआउट करके आपने मुझे बताना है
आंसर इसका, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में आपने बताना है. आई एम हैविंग ए सिस्टम विथ n CPUs and k processes, k is greater than n. So what is upper bound? मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस रेडी स्टेट में हो सकते हैं, रनिंग स्टेट में हो सकते हैं, ब्लॉक स्टेट में हो सकते हैं. That is called upper bound and lower bound, representing maximum and minimum. ठीक है. I can even have basically a variation of this question also. इसका वेरिएशन भी हो सकता है. Maybe I can put the variation here for your convenience as follows. See on board. Suppose for same question, if I put like n CPUs, n is greater than or equal to 1, and k processes, I say k is less than n, then you can ask the same question. I'm just varying the conditions. This question 2. N CPUs n greater than or equal to 1. K processes, k is less than n. What is upper bound and lower bound of the number of processes that can be the ready, running and block state? Third variation भी हो सकता है इसका. Suppose if I have one CPU, only one CPU, and k processes, k is greater than 1, then question is the same. What is upper bound, lower bound of the number of processes that can be ready, running and block state? That can be the ready, running and block state. All variations के लिए you can put all the answers. This will be an interesting exercise with which you can test your basic knowledge of process state diagram, of state queuing diagram. Okay? That will be an interesting question to work out. So all of you please work out these 3 questions and come to the next class. And before so next class का हमारा agenda होगा, that will be on threads and multi-threading. फिर उसके बाद CPU scheduling हम start करेंगे. लेकिन आज की क्लास क्लोज करने से पहले बताइएगा, if you have any questions or any doubts, then you can ask me. Anything that related to the course or anything related to gate preparation, ask me anything with regard to gate preparation, with regard to academics, anything that you can ask me before we close in another 2 minutes. Okay, if you don't have any doubt, Rakesh, no problem. Other people, anybody would like to ask anything? Yes, Nagendra Singh has raised said another thing earlier. Dispatcher is like a postman. Exactly, maybe dispatching the processes. That is correct. So boys and girls, process concept is an important chapter as far as operating system is concerned, where we have seen exactly what is a process. Another name of process is called task. Task another name है process का. ठीक है? हाँ, Nagendra Singh asked it out. Multi-programming, see, multi-programming can be implemented by means of single user or multi-user. अगर एक user है and it is submitting many programs for execution, that is called single user based multi-programmed OS. नहीं, अगर multiple users है, every user is submitting some program, then I have all the processes in the system belonging to different users. That is called multi-user based multi-program. तो multi-programming बच्चों remember कीजिएगा can come from either a single user or from a multi-user. तो जितने भी processes memory में हैं, if all those processes are submitted only by one user, that is called single user based multi-program. अगर नहीं multiple users है, like in Unix terminals, multiple users are sitting on different terminals and they are submitting their jobs or their program for execution, that is called multi-user based multi-program OS. Am I clear, नागेंद्र? समझ में आ गई बात आपको? Okay, Vinay Kaloji is saying I want to learn the whole process synchronization. Okay, ठीक है. Rakesh Joshi, you can always develop your own operating system. Why not? इसके लिए अगर आप चाह रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट अपने तौर से करना चाह रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, इंटरनेट पर जाकर गूगल सर्च कीजिएगा. देयर इज ए
वेरिएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बाय नेम, यूनिक्स का वेरिएशन है जिसका नाम है मिनिक्स। मिनिक्स, मिनी यूनिक्स। मिनिक्स का मतलब है मिनी यूनिक्स। तो ये आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पर, यू विल रीच टू दैट साइट। वहां पर आप जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, इसका कोड भी देख सकते हो, आप कंप्लीट कोड है मिनिक्स का। तो वो आप स्टडी कर सकते हो टू गेट एन आइडिया एज टू हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके लिए आपको हार्डवेयर की नॉलेज होना पड़ेगा, हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस की नॉलेज होना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा, लो लेवल प्रोग्रामिंग आपकी एफिशिएंट होना पड़ेगा। देन यू कैन डेफिनेटली बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आइदर फ्रॉम स्क्रैच, या फिर आप ये सोर्स कोड ले सकते हो मिनिक्स का, एंड देन यू कैन मेक चेंजेस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। तो आप अपना उसमें शेड्यूलर्स ऐड कर सकते हो, उसमें इंटरप्ट हैंडलर्स ऐड कर सकते हो, डिवाइस मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, फाइल मैनेजर में चेंजेस आप कर सकते हो। देन यू कैन कंपाइल द कोड एंड बेसिकली लोड इट इनटू मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। कर सकते हो आप मिनिक्स। ओके, मिनी यूनिक्स इज मिनिक्स। या फिर और भी I mean there are other open source operating system you can download, Ubuntu hai, etc. You can download from the free freeware sites, free open source sites, and you can do it. Any other question, any other doubt? Yashu Kumar, I don't know what do you mean to say, what are you trying to say? I could not understand. Maybe that is a different language. Yashu Kumar. Yeah, Vinay Kaloji, it is not difficult, excepting that you have to spend some time reading that, spend some time. लेकिन मेरी अपील ये है कि पहले right now you concentrate on GATE. GATE का एग्जाम होने के बाद you can do all this, you can do coding, you can do operating system development programming, operating system programming, ये सभी आप कर सकते हो after GATE exam. After GATE exam कर सकते हो। विनय कालोजी, पहले गेट के ऊपर फोकस कीजिएगा, गेट क्रैक कर लीजिएगा, गेट क्रैक करने के बाद आप ये सब चीजें करो। या along with gate right now if you are having ample time, slowly आप डेली या वीकली 2 hours 3 hours कुछ टाइम निकालिए and then you can go for it. Programming in C is there in GATE exam. Preeti Mishra, programming is in C language. You have to be comfortable. You have to be comfortable. कॉलेज के सेमेस्टर के साथ कैसे गेट का एग्जाम प्रिपेयर करें, ऑलरेडी वीडियोस है, देखिएगा यूट्यूब पर। वी हैव लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट यूट्यूब, हमारे अनअकैडमी चैनल पर आप उसे वॉच कर सकते हो एंड यू कैन फॉलो इट। कोई मुश्किल नहीं है। आपको कहना यह है मुझे नागेंद्र सिंह के देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन 2024 गेट 2024 में कई स्टूडेंट्स है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है और सिंगल डिजिट रैंक लाए, सिंगल, नॉट इवन डबल डिजिट, सिंगल डिजिट रैंक। सो इट इज पॉसिबल। आपने स्मार्ट स्टडी करना है, आपका कमिटमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका डेडिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। यू शुड हैव ए वेरी गुड एक्शन प्लान, राइट, प्लान ऑफ एक्शन, और आप वो जब करोगे तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। याशु कुमार इज सेइंग गेट और कोडिंग बोथ आर टफ। कोडिंग के लिए काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। ओके, गेट प्रिपरेशन, यू आर फ्रॉम कश्मीर, वेरी गुड। तोबे मार्स, यू आर आस्किंग प्री रिक्विजिट्स बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिएगा, मैं YouTube पर एक वीडियो है मेरा अनअकैडमी के चैनल पर, आप देख सकते हो, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर मैंने डिटेल में बताया है व्हाट आर दी प्री रिक्विजिट्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पढ़ें फॉर फ्रॉम गेट एग्जाम पर्सपेक्टिव, सारा का सारा मैंने डिस्कस किया है। वहां से आप देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो बच्चों, क्लास क्लोज करेंगे आज के सेशन के लिए। फिर नेक्स्ट सेशन कब होगा देखेंगे, व्हेन यू विल गेट अनाउंसमेंट, और देन यू कैन अटेंड द क्लासेस एंड कंटिन्यू द सब्जेक्ट, ठीक है ना। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। OS for interview, list of extra topics can you give? Okay Rakesh, in some video I will talk about it. ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव के ऊपर एक छोटा वीडियो बनाऊंगा मैं, या तो लाइव लेंगे या फिर प्रीमियर करूंगा मैं वीडियोस। प्रीति मिश्रा, आई कैन नॉट से टेस्ट सीरीज इज गुड, दैट इज प्योरली योर डिसीजन। आपने डिसाइड करना होगा कौन से टेस्ट सीरीज, वरना मैं बीइंग वर्किंग इन अ कंपनी आई कैन नॉट टेल यू।
ठीक है ना? You can DM me if you want. That is the hint I am giving you. नागेंद्र सिंह, कब तक कंटिन्यू करूं बोलिएगा, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिएगा, वरना आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा और वहां पर मुझे डीएम कीजिएगा, डायरेक्ट मैसेज। अगर आप ग्रुप में नहीं पूछना चाह रहे हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड। नागेंद्र सिंह, अदर पीपल। एक वीडियो बनाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव, अच्छा खासा डिटेल में डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है ना? ओके, एनीथिंग एल्स? Utkarsh Divivedi, most of the question, most of the subjects will be covered, no problem. लेकिन देखिएगा, I mean, ये तो थोड़ा कॉमन सेंस की बात है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन there will be some difference between the YouTube lecture series and the full-fledged series of the paid course. There will be some difference, obviously, ये तो बहुत obvious बात है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं YouTube पर भी मैक्सिमम कंटेंट लाने की, लेकिन देयर विल बी सम डिफरेंस, वरना फिर कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा बिटवीन पेड कोर्स एंड अनपेड फ्री कोर्स। यहाँ पर सारा का सारा डिस्कस नहीं कर सकते हैं विद रिगार्ड टू क्वेश्चंस एंड अदर थिंग्स, देयर शुड बी सम डिफरेंस। लेकिन आई एम सेइंग दैट व्हाटएवर जितना मैंने अब तक कवर किया है, काफी डेप्थ में कवर किया है इन ऑल दिस टॉपिक्स, व्हाटएवर आई डिड, बेसिकली सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं, जो डिटेल में डिस्कस किए अब तक, ठीक है? So okay boys and girls, thank you so much, take care, good night and happy weekend.